Good morning, dear students. Again, welcome back in the class. Today we will learn about a circle, some basic concept about a circle. Circle. We can define a circle that if we take 2 points anywhere on the plane, keeping one point as a constant point, take this point as the constant point and you can open your compass of up to the other point and now you can move this point along this constant point, तो you get a circle. तो आपका एक सर्कल बन जाता है, इसको हम सर्कल कहते हैं. So the constant point of the circle is known as the center of the circle. इसको हम सेंटर कहते हैं. Our circle and the distance between the constant point and the moving point is known as the radius. A circle divide a plane. एक जो सर्कल होता है वो हमारा इस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. इफ एनी पॉइंट लाइंग इन दिस रीजन आउटसाइड द सर्कल, इसको हम एक्सटीरियर पार्ट कहते हैं. एक्सटीरियर पार्ट. इफ एनी पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, तो उनको हम एक्सटीरियर पार्ट. पॉइंट ए लाइंग, सपोज वी गिव नेम ए, बी एंड सी, ओ. सो पॉइंट ए लाइंग in the exterior part of the circle, point B lying on its boundary, and C interior part of the circle. So a circle divides any region into 3 parts: exterior, on its boundary, and interior. The next article, हमारी बुक में इस पार्ट को जो एक्सटीरियर इंटीरियर है इसको इस तरह से शो किया हुआ है. ये इसका जो शेडेड पार्ट आपको दिखता है ये इसका एक्सटीरियर पार्ट होता है. ये इंटीरियर पार्ट होता है. ये एक्सटीरियर पार्ट होता है. इसमें कहीं पर भी हम इफ वी टेक एनी पॉइंट ऑन एनीवेयर, और ये इसकी बाउंड्री होती है. नेक्स्ट, if we take 2 points anywhere on a circle and we join them, then this segment AB is known as the chord. If this line is passing through the center, if this line is passing through the center, then this line is called diameter of the circle. इसको हम डायमीटर कहते हैं.
The next concept, if there are 2 points lying on a boundary, then we join them along its boundary. इसकी बाउंड्री के अलोंग हम इसको ज्वाइन करते हैं, तो दिस पार्ट इज नोन एज द आर्क ऑफ द सर्कल. इसको हम आर्क कहते हैं. One more concept, if we'll draw a circle and join them as a straight line, then the line divided into 2 parts. Each part of the circle is known as the segment. इसको हम सेगमेंट कहेंगे. इधर ये this is the major segment and thus this one will be minor segment. ये छोटा है इसलिए इसको माइनर सेगमेंट कहेंगे, इसको मेजर सेगमेंट कहेंगे. This is a circle. If 2 points lying on a circle and we join them to its center of the circle, then again circle divided into 2 parts, each part known as the sector. हम उसको सेक्टर कहते हैं. This one is the smaller part, so known as the minor sector, and this is the longer part, larger part, so this is known as the major sector. Now some blanks in exercise 10.1. क्या हम लगाऊं? ये तो तार हटा देते हैं. The center of a circle lies in, there are 2 options, exterior or interior. So this is interior. A point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies of the circle. This is the circle, this is the center. A point whose distance from the center of a circle is greater than its radius. ये कोई पॉइंट P है जिसकी रेडियस डिस्टेंस ये जो भी है उसकी, if we take another point whose distance is greater than point P, a point whose distance from the center, point Q है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से is greater than its radius, OP is the radius, then the point lying exterior or interior. So this point will lie exterior of the circle. Longest chord of a circle is, हमारे पास so many chords can be drawn. Longest chord is the chord which is passing through the center. Longest chord वो होती है जो इसके सेंटर से पास होती है, जिसको हम डायमीटर कहते हैं, जिसको हम डायमीटर कहते हैं. So longest chord of a circle is diameter of the circle. Fourth step, an arc is when its ends are the ends of a diameter. हम
this is, as I told you just now, this is the arc AB. तो इसके जब ends, when its end are the ends of the diameter, सपोज ये हमारा डायमीटर है, तो इसके एंड्स जो हैं ये हमारी आर्क है, जब इसके डायमीटर के एंड्स पर पहुंच जाएंगे और डायमीटर, तो ये क्या बन जाएगा? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। An arc is a semicircle when its ends are the ends of a diameter. Fifth, segment of a circle is the region between. Segment. As I told you that any chord of the circle divide a circle into two parts. Each part is known as the segment. तो यहां पर लिखा है segment of a circle is the region between एन आर्क। तो ये तो हमारा आर्क हो गया और ये क्या हो गया? कोड। सो सेगमेंट इज नॉन, दिस वन ऑल्सो द आर्क एंड दिस वन इज द कोड। तो दिस रीजन ऑल्सो, दिस रीजन ऑल्सो आर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कोड ऑफ सर्कल। सिक्स्थ, अ सर्कल डिवाइड द प्लेन on which it lies in three parts: exterior, interior and on its boundary. Second question, true or false? Line segment joining the center to any point on the circle is radius of circle. सेगमेंट जो भी सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, जो सर्कल पर लाई करता है, is the radius. So this is 2, वही रेडियस होती है। A circle has only finite number of equal chords. ये फाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट होगी, बिकॉज सो मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑफ द इक्वल लेंथ, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स lying on a circle. So when we join 2 points, you will get the chord of equal length. So this is false. If a circle is divided into 3 equal arcs, then each is a major arc. If a circle divide into 3 equal arcs, अगर हम इसको 3 arcs में ज्वाइन कर दें, 3 arc means there will be 3 points lying on the circle at the equal distance. Then all the arc will be equal, not any arc will be larger or greater than other. All 3 will be equal, so this is false. Fourth part, a chord of a circle which is twice as long its radius is the diameter of the circle. This is 2. A chord which is twice of the radius always be the diameter of the circle. Sector is the region between the chord and its corresponding arcs. ये हमारी chord होती है, तो सेक्टर जो होता है ये कहता है सेक्टर इज द रीजन बिटवीन chord and its corresponding arcs. This one is not sector, this one is the segment. So segment, so this is false because sector is the region between the arc and the radius. So this is false statement. And last, a circle is a plane figure Q. Thank you.